क्या आप रिसेंटली आइल्स देने वाले हो या फिर जब आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइटिंग और स्पीकिंग स्पेशली में आपका वर्ड काउंट कम पड़ रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है जब भी आप लिखते हो, लाइक ऐसे अटेम्प्ट करते हो, तो अटेम्प्शन में क्या आपको ये लगता है कि आपका वर्ड काउंट कम है और इसकी वजह से आप नंबर ऑफ आइडियाज ऐड करते जाते हो और आपका सारा राइटिंग जो है स्क्रिप्ट या फिर आप जो राइटिंग ऐसे है वो मैसअप हो जाता है? अगर आपका आंसर यस है और मोस्टली स्टूडेंट को यही दिक्कत होती है, दैट इज द सेम क्वेश्चन और सेम इश्यू व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड इवन इफ यू आर फेसिंग द सेम इश्यू देन दिस वीडियो इज फॉर यू। स्टे ट्यून, एंड तक देखना, क्योंकि ये जो आपकी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। The solution is that there are certain ways, ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसको हम एक लॉन्गर फॉर्म ऑफ सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसको हम कन्वर्ट करके फ्रॉम अ सिंगल वर्ड टू वी कैन फॉर्म अ लार्ज और ह्यूज सेंटेंसेस। So stay tuned, keep watching your favorite YouTube channel R International. I'm your trainer Deepak, and keep watching your favorite YouTube channel R International. And अभी तक आपने इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। There are certain words, or I would say vocabulary formal, कि जिसे हम the words can be replaced easily with a longer form of phrases or clauses, or in a simple term a longer sentences. तो इसको हम जैसे ही लाइक रिप्लेस करेंगे, हमारा वर्ड काउंट है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, एंड हम जो अननेसेसरी टू रीच दी वर्ड काउंट ऑफ 250, जो वर्ड काउंट पहुंचने के लिए हम जो लाइक अननेसेसरी आइडियाज डालते रहते हैं वो भी अवॉइड हो जाएगा। मींस के सिंपल विद द हेल्प ऑफ सिंपल आइदर वन और टू आइडिया एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल वी वुड बी एबल टू अटेम्प्ट द फुल टास्क परफेक्टली एंड फॉर्मली। तो उनमें से लाइक द फर्स्ट कॉमन वर्ड इज बिकॉज। ये जो एक वर्ड है लाइक बहुत ज्यादा वाइल इन स्पीकिंग एंड वाइल इन राइटिंग इन बोथ सेक्शन द वर्ड बिकॉज इज बीइंग यूज्ड मैनी टाइम, बहुत ही बार रिपीट होता रहता है। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे कैसे? सो देयर आर सर्टेन रिप्लेसमेंट ऑफ द बिकॉज। द फर्स्ट रिप्लेसमेंट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस सिचुएशन इज दैट। जब भी हमें कहीं पे बिकॉज डालना है तो फर्स्ट क्लोज है या फ्रेज है या हमारी लाइन है उसे हमें फुल स्टॉप करना है, और वहां से जब बिकॉज कंडक्ट करना है और ऐड करना है एज ए कनेक्टर, तो वहां से नया सेंटेंस बनाएंगे और वहां बिकॉज को रिप्लेस करके हम लिखेंगे द प्राइमरी रीजन फॉर दिस सिचुएशन इज दैट। तो क्या है कि एक लेंथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइमरी रीजन फॉर दिस सिचुएशन इज दैट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कंटिन्यू टू बी और कंटिन्यू टू वाइडन्स। तो ऐसे क्या है कि जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग, तो क्या है कि सेंटेंस एकदम शॉर्ट रहते हैं और स्कोर करता है। सो दैट इज द बेटर वे, अ बेटर फॉर्मल वे टू अप्रोच एनी आइडिया। So first example is done. Now let's move to the second example. Is that the primary reason for the situation is that technological advancement have outpaced regulations. तो ऐसे यहाँ पे क्या है we can use certain clauses, phrases or simple way sentences. Second option, the second possible alternative of because is owing to the fact that। ये जो वर्ड है हम यूज कर सकते हैं owing to the fact that, ये फ्रेज हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, owing to the fact that global warming is accelerating, then use comma, sea level are rising dramatically। ओके, सो ऐसे यहाँ पे हम क्या है कि वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। और सेकेंड एग्जाम्पल, owing to the fact that resources were mismanaged in the past, the resources were mismanaged and the project was terminated early. Okay, so like due to the resources were mismanaged, the project were terminated. So like a fair way or a formal way is that owing to the fact
that, because of that की जगह owing to the fact that resources were mismanaged, the project was terminated early. Third possible situation or the third possible alternative of because is this is due to the fact that, ये जो थर्ड पॉसिबल है दैट इज लाइक मोस्ट कॉमन है, मुझे भी फेवरेट है, कई जगह मैं यूज करता हूँ, दैट इज दी दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मैनी countries prioritize economic growth over environmental sustainability. Second example, this is due to the fact that training programs were not effectively implemented. तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेटिव हम यूज करेंगे बारी बारी, सो हमारा जो लेंथ ऑफ राइटिंग है इजी हो जाएगा. एंड द फोर्थ वन इज द फोर्थ पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ बिकॉज इज for the reason that, for the reason that, example, the policy was rejected for the reason that, for the reason that the policy was rejected for the reason that it failed to address public concerns. Second example, he was chosen for the reason that, he was chosen for the reason that his experience matched the job requirement perfectly. The fifth one, पांचवा जो है like possible replacement of because is on account of, on account of. For example, many species are now endangered on account of, because of जो है उसको हम straight away यहाँ पे replace करेंगे because of की जगह on account of deforestation and habitat destruction. Okay. Second example, the conference was postponed on account of, the conference was postponed because of, due to, so उसको replace करके on account of unforeseen weather conditions. तो यहाँ पे possible है कर सकते हैं. Sixth one, the last one like possible है formal कैसे like because को replace कर सकते हैं. The sixth one is as a consequence of, as a consequence of. Example, as a consequence of poor planning, because of poor planning, simple word है because of poor planning, तो उसे replace किया as a consequence of poor planning the project faced numerous delays. Second example, as a consequence of budget cuts, because of budget cuts, due to budget cuts several community programs were discontinued. तो ऐसे यहाँ पे क्या कि जो मैंने 6 लाइक फॉर्मल पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ बिकॉज, तो आप अपने डे टू डे जब राइटिंग अटेम्प्ट करते हो या फिर स्पीकिंग टास्क अटेम्प्ट करते हो, स्पेशली फॉर फॉलोअप्स, ये जो फॉलोअप टास्क है कहीं बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हो एंड you can have a great band score. So that was the first. Now let's move to the second one. The second one is these means. ये जो वर्ड है कई बारी रिपीट होता है सेम वे लाइक बिकॉज, तो दिस मीन्स का हो सकता है पॉसिबल रिप्लेसमेंट वन, और द फर्स्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट इज दिस सिग्निफाइज दैट. दिस मीन्स का हो सकता है दिस सिग्निफाइज दैट. फर्स्ट पॉसिबल लाइक एग्जांपल इज दैट the increase in population density signifies that. Okay, this means that this signifies that urban planning must be prioritized. Second, the rise in renewable energy investment signifies that industries are shifting towards sustainable practices. So that is the first. Let's move to the second. This means का possible replacement is these actively demonstrate that. These actively demonstrate that. आप ये जो वर्ड्स है अपने नोट्स में लिखते रहिए, तो आप उसको प्रैक्टिस में क्या है डे टू डे यूज कर सकते हो एंड उसे आप भूल नहीं जाओगे. So second possible is these actively demonstrate that. Example, the company's success. The company's success. This means कि वहां हो सकता है the company's success actively demonstrate that the innovation can lead to a significant growth. Second example, his dedication to the project actively demonstrate that. His dedication to the project actively demonstrate that hard work yields measurable results. That was the second. Now move to the third one. तीसरा possible replacement is these
implies that. IMPLIES. These implies that. Let's check the example. The delay in project submission. The delay in project submission implies that there were inefficiencies in the workflow. The delay in project submission implies that there were insufficiencies in the workflow. Second example, the rise in fuel prices. The rise in fuel prices implies that global supply chains are under strain, under pressure, or strain, or under pressure, or under some consequences, some issues. So that was like third. Now the fourth one is these suggest that. इसका जो possible former replacement is these suggest that. That means के the findings suggest that. These suggest this means के the findings suggest that a healthier lifestyle contributes to increased productivity. Second example, the recent trends suggest that. The recent trends suggest that consumer preference are shifting towards eco-friendly products. That was the fourth. Now move to the fifth. It can be inferred from these that. It can be inferred from this means कि आपका जो previous clause है उसका reference लेके आपको उस clause को connect करना है. तो ऐसे यहाँ पे हो सकता है it can be inferred from these that, like example, it can be inferred from this that early early intervention plays a crucial role in a disease prevention. First example. Second is that it can be inferred from this that economic stability relies heavily on effective governance. तो ऐसे यहाँ पे पॉसिबल आप इसके भी लाइक दो चार एग्जांपल बनाएंगे, आप डे टू डे यूज करिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा. एंड द लास्ट वन, द सिक्स्थ वन इज दिस सर्व्स टू हाईलाइट द फैक्ट दैट. दिस मींस कि आपका जो प्रीवियस फैक्ट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे. दिस सर्व्स टू हाईलाइट द फैक्ट दैट. एंड आपका सेकंड क्लोज मींस के इंडिपेंडेंट के साथ जो डिपेंडेंट क्लोज है वहां पे आप उसे कनेक्ट करेंगे. कैसे? एग्जांपल, दिस सर्व्स टू हाईलाइट द फैक्ट दैट education is a fundamental right for all individuals. Education, this serves to highlight that the fact education is the fundamental right for all individuals. Second example, the research serves to highlight the fact that climate change mitigate requires global cooperation. Thus, यहाँ पे you can use a variety of sentence structure and possible synonyms. नंबर 3, एच बी वर्ड है लाइक मोस्टली सभी जगह ऐसे में हम लिखते ही है. ऐसे का जब हम क्लोजिंग पार्ट आता है, द लास्ट पैराग्राफ, वहां पे हम लिखते हैं इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड या फिर इन कंक्लूजन. तो उसे भी हम रिप्लेसमेंट दे सकते हैं. जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा कंक्लूजन शॉर्ट है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, और आई डू नॉट हैव सफिशिएंट वर्ड्स, लाइंस, क्लोजेस और फ्रेजेस टू एंड माय एसे परफेक्टली, genuinely and formally. So on that occasion, you can use the possible replacement of in conclusion. And first possible replacement is to sum up everything that has been discussed so far or thus far. Okay, उसका like to conclusion या in conclusion का first replacement is to sum up everything that has been discussed thus far या फिर so far. Example, to sum up everything that has been discussed thus far, the benefits of renewable energy outweigh the challenges. सिंपल है, थोड़ा क्या एक लेंथ आपकी मेंटेन हो जाएगी. अगेन, to sum up everything that has been discussed thus far या फिर so far, the benefits of renewable energy outweigh the challenges. Second example, to sum up everything that has been discussed thus far, technological advancements have revolutionized healthcare systems. तो ऐसे क्या है कि आप एक आई वुड से जेन्युइन एंडिंग आप दे सकते हो. आपके ऐसे का जो है ना लाइक इफेक्टिव या फिर एक दी एंड, इंप्रेसिव एंड आपका हो सकता है. सेकंड देखते हैं उसका क्या हो सकता है. लाइक इन कंक्लूजन का सेकंड पॉसिबल रिप्लेसमेंट इज
टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट, सिंपल लिखते हैं हम टू कंक्लूड और हमारा जो भी फ्रेज आता है वो डाल देते हैं, या फिर लाइंस लिखते हैं, तो उसकी जगह हम थोड़ा और भी डाल सकते हैं, टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट. फॉर एग्जाम्पल, टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट टीम वर्क इज एसेंशियल फॉर organizational success. Second example, to conclude, it can be said that investing in education leads to long-term economic growth. Third replacement is that in light of in light of aforementioned points, जो हमने like ऊपर points mention किया, it is called the aforementioned, या previously mentioned point or above mentioned point, that is called aforementioned points. So in light of the aforementioned points, example, in light of the aforementioned points, it becomes clear that preventive healthcare is vital. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मल प्रेजेंटेशन हो जाती है. सेकेंड एग्जाम्पल, इन लाइट ऑफ द अफर्मेशन पॉइंट्स it is evident that sustainable practice are key to environmental conservation और conservation, environmental conservation. So ऐसे यहाँ पे third possible is in light of the aforementioned points that can be used easily. And the fourth one is और थोड़ा बहुत कम यूज होता है, लेकिन यू कैन यूज इट. अगर आपको हो कि सारे क्लोजेस फ्रेजेस यूज हो गए, अब क्या करें, तो यू कैन यूज इट दैट वन एज वेल. द फोर्थ वन इज टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू अ कंसीडरेशन. टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू अ कंसीडरेशन. एग्जांपल, टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन, it is evident that global cooperation is necessary to combat climate change. Second example, taking all factors into a consideration, one can conduct that efficient time management is critical for achieving a success or for achieving a goal or target. So it have fourth one. And the fifth one is as a final remark. In conclusion, to conclusion, उसकी जगह हो सकता है as a final remark. That is example, as a final remark, I believe that, क्योंकि ऐसे आता है ना कहीं पे कि like discuss both views and give your opinion, तो लिख सकते हैं कि as a final remark, I personally believe, in my point of view, in my consideration, in my perception. ऐसे यहाँ पे क्या कि लास्ट में आप conclusive lines ऐड कर सकते हो. Example is that as a final remark, I believe that education reforms are urgently needed, urgently required. Or as a final remark, it is worth emphasizing that cultural diversity enriches communities. Like diversification in culture, where most of the people belongs to like from like different ethical background, different culture, different religions, different regions. So that is required to achieve or required to balance or create a progression in different communities. And the last one is in summary, it is evident that. to conclude को replace कर सकते हैं in summary, it is evident that. Example देखते हैं. In summary, it is evident that digital technology has transformed communication. Or in summary, it is evident that proactive measures are crucial in mitigating the effect of climate change. तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए. आई एम श्योर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट एडिंग दोस फ्रेजेस, क्लोजेस और रिप्लेसमेंट इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ इजीली. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. The fourth one is for, F-O-R, not for F-O-U-R. I'll be like, we are on the number of 4. That doesn't mean like F-O-U-R. It is F-O-R, 4. कई जगह हम स्पीकिंग राइटिंग में मोस्टली यूज होता है. वो कैसे रिप्लेस होगा? The first possible replacement is for the explicit purpose of, for something. The for, like people are fighting for climate. तो उसी वर्ड को हम फोर है इतना सही होगा, तो इट कैन बी रिप्लेस विद लाइक पीपल आर फाइटिंग फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सो एक सेंटेंस छोटा सा होता है, वी कैन इंक्रीज द लेंथ जेन्युइनली एंड फॉर्मली, दैट इज एक्सेप्टेड इन आइल्स. सो एग्जांपल लेते हैं इसका. द रिसर्च वाज कंडक्टेड फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट. सेकंड एग्जांपल, the campaign was launched
for the explicit purpose of raising awareness about mental health. First. Second is with the intention of, with the intention of, with the motive of, ऐसे भी यहाँ पे word हो सकते हैं. With the intention of, example, the government introduced subsidies with the intention of boosting small businesses or small entrepreneurs, small scale industries. Okay. Second example, the team redesigned the app with the intention of or with the motive of or with the aim of enhancing user experience. तो इसे यहाँ पे आप possible replacement डाल सकते हो. The third one is with the objective of. For की जगह हम डाल सकते हैं with the objective of. Example, the new policy was implemented. The new policy was launched, introduced, or implemented with the objective of reducing unemployment or to increase the employment ratio. Second example, the program was created with the objective of. The program was created with the objective of improving literacy rates in rural areas. The fourth replacement is in order to achieve. हम लिखते हैं कई जगह लगते हैं क्या in order to and then state away something. So in order to achieve, for को replace कर सकते हैं in order to achieve something. For example, in order to achieve long-term success. In order to achieve a long-term success, companies must invest in sustainable practice. Second example, in order to achieve a higher level of efficiency, the company automated several procedures, several processes, or the company has introduced, implement, installed, or imported several automatic machineries, robotics, AI, and revolutionized the production system. So it can be in order to achieve. The fifth one is for the precise aim of, for the most probably the most important aim, the precise aim, for the precise aim of, a motive of, or a goal of. For example, the meeting was organized for the precise aim of, the meeting was organized for the precise aim of discussing financial strategies. Second example, the workshop was held for the precise aim of training employees in critical, or it is kind of a crisis management. When we find ourselves in a financial critical situation or markets related critical situation, so the workshop was held for the precise aim of training employees in crisis management. And the sixth one is to serve the purpose of. For को replace हो सकता है to serve the purpose of. Example, the fund was established to serve the purpose of aiding disaster affected regions. Or second example, the manual was created to serve the purpose of guiding new employees through onboarding procedures or onboarding process. So that those are the 6 possible. Now number 5, the fifth word. For number 5 or fifth word is like. Mostly ये word कहाँ होता है? Like जब हम use करते हैं like means के when we are about to state an example with the help of cohesive devices. Like is nothing but just a cohesive device. So when we are trying to state or mention some kind of nouns or examples, then on that account or on account of that condition we use like. तो like को कैसे replace करके थोड़ा lengthy sentence बना सकते हैं. So first possible replacement is along the lines of. The first possible replacement is along the lines of. For example, the architecture of this building is designed along the lines of a classical Roman style. Okay, like such as the example लिखते हैं यहाँ पे the architect of the building is designed like a classical Roman style. Simple. तो उसे हमने replacement दिया है the architect of the building is designed along the lines of classical Roman style. Second example, the new curriculum was developed along the lines of international education standard. Like such as को हमने क्या किया along the lines of. First, second is that
इन अ मैनर सिमिलर टू, लाइक को हम रिप्लेस करेंगे इन अ मैनर सिमिलर टू. फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैनर सिमिलर टू अदर ग्लोबल लीडर्स, द प्रेसिडेंट addressed the nation with optimism. Second example, the technology functions in a manner similar to how traditional machines process data. So like can be replaced with in a manner similar to. And the third is comparable to. Align with it is kind of a comparable to. The current crisis is comparable to the financial downturn of the early 2000s, like 20s. Okay. Example is her determination to success is comparable to that of the greatest athletes in history, like the greatest athletes of history, such as the greatest athletes of history. That means it is comparable to that. It is comparable to that. And the fourth one is bearing resemblance of, like resembling means like having the similarity with something or some object or some person. It is called the resembling, to resemble something, like A is resembles B, मीन्स के दोनों एक ही है. सो उसको हमने यहाँ वर्ड बनाया अ फ्रेज इज लाइक bearing a resemble to. एग्जाम्पल देखते हैं. द पेंटिंग, ओके, द आर्किटेक्चर, मॉडर्न स्ट्रक्चर, डिजाइन, कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है. सो लाइक द पेंटिंग bears a resemble to the works of Van Gogh. इट इज काइंड ऑफ लाइक दोनों सेम है ऐसा. यहाँ पे रिजेम्बलिंग मीन्स के क्रिटिसाइज या फिर यहाँ पे डेप्टिक या फिर इट इज काइंड ऑफ यहाँ पे उसे इंडिकेट किया जा रहा है. सेकंड इज दैट द स्ट्रक्चर bears a resembles to traditional Japanese pagodas. Like Japanese का एक स्ट्रक्चर है pagodas. It is kind of architecture, design and a way of constructing a kind of a traditional houses like temples. It is called a pagodas. So the structure bears a resemblance to traditional Japanese pagodas. And fifth one is analogs to. It is kind of थोड़ा difficult, लेकिन अभी आप कुछ यूज करना चाहो, आपके पास चॉइस नहीं है तो आप you can use it. The example is that the process is analogs to how plants absorb nutrition from the soil. Or second, this experiment is analogous to the studies conducted on human behavior is controlled environments. तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि जो वर्ब्स है या फिर हमारे पास जो नॉर्मल वर्ड्स थे उसको हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है. दैट इन अ प्रॉपर वे ऑफ अप्रोच, फॉर्मल वे ऑफ अप्रोचिंग मीन्स के हमने राइटिंग और हमारी स्पीकिंग में ऐसे यहाँ पे कुछ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पॉसिबल क्लोजेस, फ्रेजेस, फॉर्मल क्लोजेस, फॉर्मल फ्रेजेस, ऐसे हम रिप्लेसमेंट देंगे ताकि, और एज ए रिजल्ट हमारा जो राइटिंग टास्क है और स्पीकिंग टास्क है उसमें हम दो जगह हमारा स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं. वी कैन एनहेंस द स्कोर इन टू वे. फर्स्ट इज लाइक लेक्सिकल रिसोर्सेज. ऐसे वर्ब यूज करेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्लोजेस फ्रेजेस हमारी वैरायटी ऑफ वोकेबलरी की जो रिक्वायरमेंट है, फॉर्मल वोकेबलरी की रिक्वायरमेंट वो क्लियर होगी. एंड सेकंड, रेंज इन ग्रामर, क्योंकि एक ही वर्ड, एक ही टाइप के लिंकर्स या फिर कनेक्टर यूज करेंगे तो सेम पैटर्न ऑफ ग्रामर वुड बी रिपीटेड. तो रिपीटेशन ऑफ ग्रामर से भी हम बचेंगे एंड वैरायटी ऑफ ग्रामर जनरेट होगा, विच विल हेल्प अस टू जनरेट अ हाई स्कोर. उसकी वजह से हमारा जो स्कोर है वो बढ़ेगा.